Zainab, what exactly is the YES program? So the YES program, which stands for the Youth Exchange and Study Program, it's a year-long exchange program to the United States. It is sponsored by the US Department of State. So जब आप 9th या 10th class में हैं, you will apply for this program. So applications का process ये होता है कि first stage, there's a total 5 or 6 stages. The first stage is you have to get your पिछले 3 साल के transcripts. So if you're a 9th grade student, you will get 6th, 7th, 8th grade transcripts. If you're a 10th grade student, you will get 7th, 8th, and 9th grade transcripts. You will get them attested by your schools. And उसके साथ अपना NIC या another smart card या बे फॉर्म अटैच करेंगी उसकी कॉपी और अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स के साथ you have to courier it to the guest program office, which is in Karachi. They have all the information of the address and everything posted on their Facebook and Instagram as well, and also on the Yes Program Pakistan website. So first हो गई कि आपने अपनी सारे 3 साल के ट्रांसक्रिप्ट पिछले आपने उन्हें पे फॉर्म एंड पासपोर्ट साइज पिक्चर्स उनको कोरी कर दी. If you pass the first stage, they will get back to you on email और वो आपको What do you एक mean you link. passed the first stage? तो पहले जो पहला They set they फिल्टर set a करने का वो benchmark. ग्रेड्स. They set a benchmark. उनका एक क्राइटेरिया होता है कि हमारे जितने भी बच्चे आए हैं जिनकी भी एप्लीकेशंस आई हैं उनमें से जिनके ग्रेड्स इस बेंचमार्क आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज इससे ऊपर है, there's a certain amount of kids that they have to choose for the next stage. So they filter out depending upon the 3 transcript that you submit, depending upon आपके grades कैसे हैं और they filter out transcripts or grades से. उसके बाद जब आपका if you get the second stage की offer, so that it's a written reading test. It's like IELTS. So you go there first of all. Reading का test होता है. It's like vocabulary, grammar. There's sample papers on the internet as well that you can see to practice. उसके बाद there's a listening paper. पीछे आपकी ऑडियो चल रही होती है और आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन टाइप MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं. आपने ऑडियो पे जो भी कॉम्प्रिहेंशन चल रही है उसको सुन के आपने वो सॉल्व करनी होती है. एंड समटाइम्स देयर इज लाइक अ ऐसे पार्ट एज वेल. इस साल मुझे जैसे जो नए बच्चे आ रहे हैं उनसे जो मेरी बात हुई तो देर से कि अब उन्होंने शायद हटा दिए, बट व्हेन आई वाज गिविंग इट हमारा फिर एक शॉर्ट एसेस का भी एक सेक्शन था. उसमें 3 क्वेश्चंस थे. इट वाज मोर लाइक सिनेरियोज कि आप बताएं वन ऑफ योर बिगेस्ट अचीवमेंट्स इन लाइफ. लाइक यू हैव टू टेल अबाउट योरसेल्फ. दे वांट टू गेट टू नो योर पर्सपेक्टिव और योर आप चीजों को अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं. आप आपने अपने किसी कॉन्फ्लिक्ट को आपने रिजॉल्व किया आप उस बारे में बताएं. They want to see your problem solving skills, how you deal with situations. They'll be short essay questions. मेरी टाइम पे 3 होते थे, but they're like short. They're like half a page each. तो वो 3 आपने अपने बारे में ही ज्यादातर होते हैं. Short essay questions आपके बारे में होंगे या आपके पर्सपेक्टिव के बारे में होंगे. आपसे पूछ लेंगे what do you think about होस्ट फैमिली और मतलब बच्चे का रिलेशनशिप के बारे में आप बताएं कि अगर if you get accepted and everything, would you like to continue your relationship with host family and everything. So it all depends upon situation and scenarios. So when you go to the interview, you आप सारे forms or applications अपने साथ लेके जाते हैं. In case you get to the next round, your application is already done and they can get started the host family selection process as well side by side. तो interview में ये होता है कि पहले एक बड़े से टेबल पे there's like group discussion. So they give you a scenario और वो जो भी 20 kids बैठे होते हैं पूरे टेबल के इर्द गिर्द उनको कहते हैं कि आपके पास 10 minutes हैं. आप लोगों ने इस सिनेरियो के बारे में डिस्कशन करनी है और हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे. वी विल जस्ट ऑब्जर्व. और वो मतलब मार्क्स वगैरह लगा रहे होते हैं. उनके पास शीट्स होती हैं. तो हमें जो सिनेरियो मिला था वो ये था कि आप सिलेक्ट हो गए हैं और आपके ग्रेड्स गंदे आए हैं और आप अपनी होस्ट फैमिली आपकी होस्ट मदर को पता चल गया और आखिर में लिखा हुआ था कि ओपन द डोर होस्ट मदर इज देयर शी सेज दैट कि अब आप इसको टैकल करना, आप इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, आप इस पे अपना पर्सपेक्टिव दें. तो मैं तो जैसे ही वो बोलेंगे टाइम स्टार्ट्स नाउ, आई वुड रिकमेंड इफ एनीबॉडी इज अप्लाइंग एंड गोइंग थ्रू द स्टेज और एनीथिंग, start the conversation. Gives you so much more बहुत अच्छा समझ आता है if you start the conversation. So last time when it was my interview process, I started the conversation. I was like, I अपना perspective दिया कि if this situation would happen to me, I would deal it इस तरह. फिर सारे बच्चे उसके बारे में अपना perspective देते हैं कि करके सारा अपना बच्चे मतलब conversation continue करते हैं for the next 10 minutes and the observers see कौन सा बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है बोलने के लिए, किस बच्चे के पर्सपेक्टिव कितना अच्छा है, किस बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं. दे मार्क यू ऑन दैट. आफ्टर दैट देयर इज वन ऑन वन इंटरव्यू सेशंस. उसके लिए यू गो इन अनदर रूम. देयर इज लाइक अ पैनल ऑफ 3 people from the yes selection committee. They ask you about different questions. There's like a series of potential questions on the internet as well, but they're usually about yourself, your strengths and weaknesses, and it's pretty much same
like scenario based. Okay, what if you cannot find halal food over there? Would you be okay with like vegetarian? They want to see your perspective on different conflicts. Like मेरे से पूछा था कि अगर आप उधर गए हैं और खाने का मसला है तो आप इस सिचुएशन कैसे टैकल करेंगे? The best way to answer it is like I'll not burdenize my host family and be like I want halal food and I'll be okay with any vegetarian diet I can get. And so usually the interview is about 5-10 minutes. It's with three three panel people. It's pretty much about you, so just be confident and go for it, and it should be good. And in case you get through the interview, they will send you an email with another written exam that you have to clear. It's like an English proficiency test. It's called ELTIS, ELTIS. It's also a listening and writing exam, listening, reading, and writing. Same as the second exam, the previous exam that you give in the second stage. So you can so it's pretty much about grammar and then listening comprehension and then few short essays at the end. And after that is the final state. What they do is whoever passes through the ALTIS, the English proficiency test stage as well, they just take their individual points from each stage and add them up. And the upper 77 kids who made it to the merit, they select them because they have a quota seats of 77 students from Pakistan only, and they put like 10 students on the wait list. For example, if anyone due to any family problems or cannot make it or cannot commit to them, they have people on the wait list that they can move forward, and there's still chance for them to avail this opportunity as well. That's pretty much about the selection process. The application usually come out in September, the September, and the deadline is for October first week, and then it takes about 5 to 6 months in the whole process, being honest, and then you get to know about your selection around February or March, and then you go in the coming August. So the eligibility criteria for it is you should be minimum 15 years old, but not older than 17 years old by the time when you're supposed to travel. So if you're applying for the 2024 exchange year and you're applying in September 2023, so you have to see that by the time when you will be flying to the US, which will be August 2024, are you between 15 and 17 years old, then you're eligible to apply. That's Okay. the अच्छा सही है तो eligibility. अच्छा जैनब एक चीज मैंने पूछनी है बिकॉज आई एक सेकेंड मेरा कैमरा क्यों बंद हो गया अच्छा हाँ तो बिकॉज आई रिमेम्बर यू प्रिपेयरिंग फॉर द इंटायर प्रोसेस तो Yeah, टाइम टेकिंग कितना है और time कितनी taking एफर्ट up. डालनी पड़ती है और ऑनेस्टली Hmm. बिल्कुल I'm सही से बताऊंगी, effort डालनी पड़ेगी. Effort के बगैर तो कुछ भी नहीं मिलता. You have to work really hard, but commit some time to it. Prepare for the interview questions, prepare for the written exam, prepare for the essay questions. Like I remember I used to write short essays or internet से ideas लेके draft लिख के उसको brainstorm करके इंटरव्यू से पहले potential questions की list बना के सबको brainstorm करके इंटरनेट से देख के what would be a good idea. तो मतलब जिसमें जैसे they ask you about your weaknesses, you cannot tell them ऐसी weakness जो आपके ही against जाए. So you have to be diplomatic about few questions. So the best thing is prepare her stage se pehle. You have like a month time between first. If you cleared the next stage, there's like one month gap between it. Even agar aapko pata bhi chala if you cleared it to the next stage or not, start preparing for it after you come back from your first or the previous stage. Be hopeful, start preparing for it. Or I know school hota hai, O level, A level, whatever is going on, academies हैं, but still like थोड़ा सा time in a day, like 30 minutes or just weekend पे बैठे laptop या computer, just research about it, research about your next stage, be clear about it, contact the yes बच्चे. I'm here to help. You can get anybody who's watching us and want to apply. I'm more than happy to help. Ask them about it कि क्या what to expect, क्या होगा, कैसे होगा, how to deal with the tips and tricks, and prepare for it. Like dedication ke bagair, you have to work hard for it. It's very competitive. The acceptance rate for it is like around very less than 5% or something. For my batch, around 7,800 kids applied, and only 77 got selected. So it's a very difficult process. Nice. It's like less. Sometimes it's 1%, 2% acceptance rate too. You have to be determined. You have to work hard, focused, and
self confident रहे, especially ठीक है, your मतलब interview matters a lot. मजाक नहीं है, इट्स सीरियस, नहीं 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 मतलब नहीं, take it सीरियस seriously, टॉपिक। take it seriously, take अच्छा it ठीक है। अच्छा seriously. ज़ैनब, तुमने कहा था कि कॉस्ट फुली फंडेड प्रोग्राम है, तो कॉस्ट एज़ Yeah, इन अब आप वहाँ रह रहे हो सॉरी तो एक यू नीड। सेकंड। हाँ, हाँ। सॉरी एक बात मैंने करनी है इसमें। अच्छा वैसे एलिजिबिलिटी के लिए मैंने सुना है एक एक दो और भी चीज़ें मैटर करती हैं एक्सेप्ट फॉर एज। आई थिंक इट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली बग्ड मी was that you're not allowed to participate in this if yeah, you've bro. been to the Yeah, US yeah, I first. forgot. So मैं भी बोल yeah, रही just wanted to mention it for those who have been to the US. This video is not for you because you cannot even apply. हाँ, एंड Yeah, यू so one of बेसिकली वेस्टेड 11 minutes of your life। oh, it's yeah, one of the eligibility requirements is if you have ever traveled to the US before, you Hmm. cannot apply for it. Like few of my friends who have been to the US for tourist purposes or just to see their family or anything, you cannot apply for it. It's like a program requirement. ये इसलिए करते हैं ताकि encourage students who have not been there, उनको उधर की culture का नहीं पता, उधर की different उधर की ट्रेडिशंस और वैल्यूज का नहीं पता, to give them an opportunity कि वो पहली दफा जाएं और उसको एक्सपीरियंस करें एक्सपीरियंस करें। and have like a new mindset and perspective of the US. सो वैसा, डू यू रिमेंबर एनी अदर एलिजिबिलिटी के प्रॉब्लम्स? यार मेरे साथ तो जेन्युइनली ये पहला ही था। आई रेड इट एंड आई वाज लाइक बस इधर ही खत्म हो गया मेरा तो प्रोसेस। I मैं feel कर नहीं like सकती। yeah, another eligibility criteria is your grades. It should be like you should have more than 60% in हम्म every subject you take in the finals. So it's like 60%. हम्म That's not bad, but yeah, हाँ, the फिर स्टिल necessary दिया, necessary और criteria स्पेशली बिकॉज मेरिट लिस्ट बन रही है कॉन्स्टेंटली, तो merit आपको list, हाईएस्ट ग्रेड्स ही चाहिए होंगे, अब highest grade. 60% पे तो Yes, मेरे ख्याल में highest grade. गुजारा नहीं होगा। Yeah, but they set up like the minimum for the people to apply. अच्छा ठीक है। तो अच्छा ज़ैनब, कॉस्ट की बात करते हैं। अभी तुम कह रही थी कि तुम कह रही हो Cost. कि बिल्कुल ही फुली फंडेड है, तो योर पेरेंट्स पे Yes. यू एब्सोल्युटली नथिंग व्हेन यू आर मूविंग? I'll talk about it. So जब आप लोग ये सारे प्रोसेस वगैरह करें, आपकी जो सिर्फ कॉस्ट आएगी, जैसे मेरी कॉस्ट आई थी, यू हैव टू गेट सम वैक्सीन्स। जब आपकी जब आप एक्सेप्ट हो गए हैं तो दे विल सेंड यू मोर फॉर्म्स, और उसके अलावा कुछ वैक्सीन लेनी पड़ती हैं लाइक पोलियो की, और एक दो और द वंस यू हैव मिस्ड। तो मेरी पेरेंट्स की कॉस्ट आई थी द वैक्सीनेशन दैट आई हैड टू गेट, the pictures I had to get, like visa की picture वगैरह, everything else is fully funded. मतलब वीजा इंटरव्यू, वीजा की कॉस्ट फुली फंडेड है, आपके ट्रैवल फुली फंडेड है, आपकी लिविंग फुली फंडेड, इवन यू गेट स्टाइपेंड मनी व्हेन यू आर इन द यूएस। यू गेट $120 पर मंथ फ्रॉम द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जिसमें आपने अपना फोन का बिल करना है, इफ यू वांट टू गो आउट विद फ्रेंड्स, उसके खाने पीने के एक्सपेंसिव, अपने कपड़े, द होस्ट फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल टू पे फॉर like your living, your fooding expenses, or whatever is involved in the home. Like आपको खाना देंगे, आपको लंच मनी देंगे, आपको अपने trips पे साथ अगर लेके जाना चाहते हैं तो it's up to them. But you have to pay for your phone bill, your hangouts with friends or anything, your own clothes, whatever is like आपकी अपने expensive, which is like your own like which is your own wants. They'll provide your needs. You have to stipend money से आपने अपनी wants करनी है, like phone का bill है, और कुछ host families तो phone मतलब ज़्यादा भी करते हैं, like मेरी host family थी, they would pay for my phone bill as well. So it depends on host family to host family as well. But मामा पापा की तरफ से there is no cost that they have to give. Like जब मैं जा रही थी तो मेरी मामा पापा gave me some money just to be safe, कि कोई emergency हो जाती है या you wanna get something जो अच्छा लग रहा है, लेकिन stipend money is not enough to cover for that. So parents, if they wanna give their kids some money just to be safe, it is good, but it is not required at all. Stipend से अच्छा गुजारा हो जाता है. $120 is pretty much enough, and you're getting all the necessary things, or you're taken care of. There are people looking forward for, looking taking care of you, not just host family but the placement organization that is responsible for you. हर बच्चे के साथ एक placement organization का representative linked होता है जो monthly इसके साथ meetings करता है in order to make sure that the kid is doing good. host family का treatment with the kid अच्छा है, और host family के साथ भी हर month वो meeting रखते हैं in order to make sure कि host family और kid बच्चे के बीच में कोई मसले तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मेरी जो कोऑर्डिनेटर थी, लोकल कोऑर्डिनेटर फ्रॉम माय प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शी लिव यूज्ड टू लिव डाउन द स्ट्रीट फ्रॉम मी, तो दैट वाज वेरी कन्वीनियंट। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भी हुई बट मैंने कुछ अपनी होस्ट फैमिली से लाइक आई एम रिलक्टेंट और आई वांट कि मैं ये पूछूं या ना पूछूं, या तो आई वुड go to her for help, or I would call her for help.
So don't think that you're alone. People are there to help you. There's like even like a helpline for you. In case any emergency happens, you just call on that helpline, and it's like made Oh, for nice. exchange students. And be like, I'm here, I need help, this is what's happening. And they'll send you immediate help. So don't worry about the cost or anything. कॉस्ट कोई नहीं आएगी, बस आपने जो अपना करना है. मेरी जो कॉस्ट है, मैंने जो अपना यूएस जाने के लिए बैग्स खरीदे थे, लाइक वो आप अप टू देम, यू कैन यूज ओल्ड बैग्स. जो मैंने यूएस जाने के लिए थोड़े बहुत विंटर कोट खरीदा, जैकेट, मफलर, इट्स अप टू यू. आपकी जो कॉस्ट आएगी वो अपनी आपकी वांट्स की आएगी. हाँ, नीड सारी एग्जैक्टली. दे विल कवर फॉर यू. And if you don't want to spend any money, that is perfectly fine, because all the things you need, they will cover for you. They'll cover travel, fooding, hotel stays, जब आप transit में हैं, सारा कुछ. It's fully funded. Okay, so how is it living with another family? Like, give me two advantages and two disadvantages. अच्छा, this So and for the parents watching us, क्योंकि मैंने सुना है कि हमें अम्मी अबू भी yes. देखते हैं apparently. तो how would you convince them to send their children इतना Perfect. abroad? क्योंकि आपको पता है देसी parents extremely Yes. overprotective, Yes. Yes. cannot I fathom the idea of their children living with another family. True, true, true. So first of all, I want to say सारे parents को कि support their children, support. Like जब मैं जा रही थी, काफी दूर के फैमिली मेंबर्स ने मामा पापा को कहा कि मत भेजे, लड़की है, बहुत दूर है, क्या करेगी, कोई जरूरत नहीं है, घर में सही तो एजुकेशन हो रही है, एवरीथिंग इज डूइंग गुड. मतलब मेरे मामा पापा भी थोड़ा डरे हुए थे, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू माय मॉम एंड डैड फॉर सपोर्टिंग मी एंड एवरीथिंग. एंड please support your kids if they want to apply anywhere. Be supportive to them, because उनकी अपनी इसमें बेटी है. So it's for their own self growth. It's for their own freedom and independence, being more responsible. So सबसे पहले, as you talked about, how is it moving from one country to another? It's not easy. आप जब host family के साथ रहते हैं, although मेरी होस्ट फैमिली बहुत अच्छी थी, दे टुक गुड केयर ऑफ मी, आई वुड से. मेरा अभी भी बहुत अच्छा बॉन्ड है, हालांकि मैं अब उनसे लाइक आई लिव इन अनदर स्टेट, पर आई गो टू विजिट देम ऑन लाइक स्मॉल ब्रेक, जिसमें मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती. लाइक मेरी थैंक्सगिविंग ब्रेक हुई थी, इट वाज लाइक 5 days. So I flew from here to Pittsburgh, where I was placed in Pittsburgh, Pennsylvania, for those of you who don't know. And I spend those time with them, so I still have like a bond with them. I call them, we talk, and it's beautiful. You'll make lifelong family members. So living with host family, they take care of you. Most host families are nice, and if in case you don't feel like they're not nice, or you're not getting along with them, you can always change your host family or talk to the placement organization about it, and they'll offer help. So जाहिर सी बात है, अपने घर की अलग बात होती है और किसी और के घर की अलग बात होती है. So you will feel that कि अगर मेरे मामा पापा होते हैं, तो I would be more comfortable talking to them about this. So मुझे like आपको उनसे कुछ बारे में बात करने में 2-3 दफा सोचना पड़ेगा, क्या मैंने इधर जाना है, मैं इनसे पूछूं ना पूछूं, उनका क्या वहाँ रिएक्शन पर होगा. मजीद तमीज भी करनी पड़ेगी, है ना? अम्मी अबू के साथ तो सही हमारा कोई बात है. फिल्टर नहीं होता. अपने घर पे आप खुले होके बैठे होते हैं, कोई काम शाम नहीं करना, खैर है, मामा पापा है, कोई नहीं है. Whatever your like host family में अगर आपको कोई chores मिलेंगे, तो you have to do that, be respectful of that. Although इतने ज्यादा नहीं होंगे, everybody is like a team there, it's like family. They'll not treat you as an outsider, they'll treat you as a family. But it's a little different from your own home, to be very honest. But it's nice, they'll take care of you. Homesickness होगी, बहुत ज्यादा होगी, because it's like 10-11 months without seeing your family, although you can talk to them on video call like I used to do every day. But homesickness होगी, there'll be days like you'll be crying and everything. But just be hopeful. Just आप अपने आप को बिजी रखें, आप अपने आप को एक्टिविटी से बिजी रखें. Like I joined high school sports, I played softball, basketball, and track and field in different seasons. And Mhm. I was in school clubs. I used to volunteer there in different organizations. Like I volunteered at the food bank. So keep yourself busy with stuff, so you don't get into that homesickness phase. And also like masjids hoti hain. This Pittsburgh mein masjid thi. So try to go there if you ever feel homesick or anything. Go to the masjid. वहाँ पर आंटियां मिल जाती हैं. They invite you to their house. आपकी देसी लोगों से मुलाकात हो जाती है. मेरे स्कूल में कोई देसी नहीं था. मेरे पूरे नेबरहुड में कोई देसी नहीं था. बट मेरे से 20 मिनट दूर जो मस्जिद थी, उधर काफी देसी लोग आते थे. तो उधर मुझे एक आंटी से मुलाकात हुई, उनकी 3 बेटियां थी. So they become my desi family there. मैं once a month या जब टाइम मिले मैं उनके घर जाती थी.
और उनकी और मेरी होस्ट फैमिली की भी दोस्ती हो गई थी, तो माई होस्ट फैमिली वाज आल्सो कंफर्टेबल सेंडिंग मी देयर बिकॉज़ दे न्यू कि वो सेफ पीपल एंड आई विल बी फाइन देयर। तो आई वुड गो देयर, आंटी बिरयानी बनाती थी मेरे लिए और बड़े अपने बच्चों की तरह आंटी मेरा ख्याल करती थी। और आंटी जब इस्लामाबाद असल आई, में आंटी जैनब के लिए बिरयानी बनाती थी, तो आंटी इसलिए ज्यादा फेवरेट है। यस आंटी फेवरेट। आंटी जब इस्लामाबाद आई तो हमारे घर हम लोग फिर उनको इनवाइट किया, तो मेरी रियल मामा जो है फिर आंटी के साथ मिली, और आंटी और मामा की व्हाट्सएप पे भी दोस्ती हो गई थी। बोलते हैं ना चलो, देसी ये भी मॉम्स और अच्छा आंटी, है। तो दैट वाज Yeah. गुड। आंटी और मामा भी व्हाट्सएप पे तो बातें शातें मतलब कर रही थी। जिन पेरेंट्स को ये कंसर्न है कि कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो, अच्छा चलो, व्हाइल वी यस एट इट, लोगों को नॉर्मली लड़कियों का ये भी होता है प्राइवेसी का प्रॉब्लम, इफ यू आर लिविंग विद बॉयज, तो वो डू यू वांट टू टॉक अबाउट दैट थोड़ा सा उसके बारे में? यस यस एज Eliza is saying, you'll be taken care of। पेरेंट्स बिल्कुल फिक्र ना करें कि हम अपना बच्चा किसी और कंट्री भेज रहे हैं और शी और ही विल बी अलोन, और कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो होस्ट फैमिलीज भी होती हैं, उनकी भी सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, पुलिस चेक्स होते हैं, दे मेक श्योर दैट द होस्ट फैमिली इज सेफ फॉर द किड। और उनके इंटरव्यूज होते हैं होस्ट फैमिली के भी, होस्ट फैमिली के घर का चेक होता है, लाइक दे मेक श्योर कि होस्ट फैमिली सेफ है और बच्चे के लिए ठीक है, और you'll be taken care of। ये बिल्कुल बात नहीं है। देसी फैमिलीज भी मिल जाएंगे, इफ यू गो टू द मस्जिद देयर विल बी देसी पीपल, देसी कम्युनिटी बहुत सपोर्ट करते हैं बच्चों को। लाइक आंटीज मिल जाएंगी, दे इनवाइट यू, लाइक ईद मैंने सेलिब्रेट की थी मस्जिद में उन आंटी के साथ, उनके घर वालों के साथ, और आई हैड अ गुड ईद एक्सपीरियंस एज वेल। सो माय प्रो टिप इज कि आप इन्वॉल्व with the school as much as you can। Like I used to do presentations about Pakistan in different classes, elementary school में, food bank में, library में, like tell the people about Pakistan, invite them to Pakistan, like because मोस्टली यूएस के लोगों का पाकिस्तान या पाकिस्तानी से कोई इंटरेक्शन नहीं होता। उन इलाकों से, उन इलाकों के अलावा जहाँ पर पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, लाइक स्प्रिंगडेल पिट्सबर्ग जहाँ पर मैं थी, वहाँ पर बहुत कम पाकिस्तानी पॉपुलेशन थी। तो इट्स योर जॉब कि आप एम्बेसडर हैं अपने कंट्री के, है ना, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का एक अच्छा इंप्रेशन उनके दिलों में सेटल करें। तो यू हैव टू बी नाइस टू एवरीबॉडी और जस्ट बी इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, डू गुड इन एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स ज्वाइन करें, क्लब्स, everything। And also like when we're talking about parents and everything, it's safe है बिल्कुल, there is no problem at all, just support your kid। uh, be also like sometimes ये होता था मेरे साथ कि जैसे बच्चे थे, बच्चे like the kids get busy with their own routines, with the sports हैं ये वो, and in case they're not able to call their home that frequently, so parents को वो भी समझना चाहिए कि आपका बच्चा जो है is doing good, is playing sports and everything, and it's for उसकी अपनी Are you बेहतरी के talking लिए। out like of experience? no, no, I'm not talking about experience। मैं बहुत ना रोंदू बच्चा हूँ, मैं तो हर वक्त मामा बाबा, और मैं तो मुझे 5 मिनट भी मिलते थे तो मैं आई वुड कॉल, आई वुड बी लाइक, लेकिन आई लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माय अदर पीयर्स, उनसे सुना ये वो तो, Hmm. क्योंकि like, इस अच्छा प्रोग्राम की अच्छा, बहुत एक और बेनिफिट्स चीज है। ये बताओ, अब प्रेफरेंसेस होती हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम कोई प्रेफरेंस दे सकती हो होस्ट फैमिली के बारे में? नहीं नहीं, मैं कोई प्रेफरेंस नहीं दे सकती जगह के बारे में या होस्ट फैमिली के बारे में। वो जो है ना, जितनी आप फॉर एग्जांपल दे हैव 1000 एप्लीकेशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, सिर्फ पाकिस्तान से बच्चे नहीं जाते, 40 डिफरेंट कंट्रीज से भी बच्चे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल दे हैव 1000 एप्लीकेशन, दे विल डिवाइड दोज एप्लीकेशंस बाय डिफरेंट स्टेट्स, और वो अपने अपने उन स्टेट्स के ऑफिसेस को वो एप्लीकेशन भेजेंगे कि आपकी जिम्मेदारी है इन बच्चों की प्लेसमेंट कराना, जो प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दे विल वर्क अपॉन दैट, जो उनके एरिया में होस्ट फैमिली होंगे वो उनको वो ऑफर करेंगे कि ये हमारे बच्चे हैं। वरना वो अपनी वेबसाइट पे भी डालते हैं कि अगर किसी और ने मतलब, दे जस्ट इट्स अ रैंडम प्रोसेस। होस्ट फैमिली के पास एप्लीकेशन जाएंगे, उनको जो बच्चा पसंद आया, आया, आपसे वो यस वाले पूछेंगे कि दिस इज द होस्ट फैमिली, ये उनका लेटर है टू यू, दिस इज देयर प्रोफाइल, लाइक यू गेट आपकी प्रोफाइल जैसे उनको दी जा रही है ना चूज करने Hmm. के लिए, जब उन्होंने आपको चूज कर लिया तो आपको उनकी प्रोफाइल दी जाएगी, और आपसे पूछेंगे कि डू यू एक्सेप्ट इट, ये इनकी इसमें हॉबीज लिखी है, इनकी प्रोफेशन लिखा है, इनकी एजुकेशन लिखी है, इनके घर का माहौल लिखे, घर में कितने पेट्स हैं, कितने लोग हैं घर में, कितने कमरे हैं, आपको सेपरेट रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी डिटेल्स लिखी होती है, खाने का क्या होगा, हलाल फूड मिलेगा नहीं मिलेगा, वेजिटेरियन मिलेगा, सारा लिखा होता है। उनके ऐसे लिखे होते हैं जिनमें वो आपसे बात करें कि मैं ये हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू है, ये वो। तो यू हैव टू मेक अ डिसीजन उसके बाद अपनी अच्छा, तो कैन मर्जी यू से। से नो कि ओके यू ये कैन से नो, अच्छा, बट देन यू विल हैव टू वेट फॉर अनदर प्लेसमेंट, उसमें टाइम भी लग सकता है। but if you feel a red flag, you don't feel like it'll be a good fit, say no। myths regarding the entire process, regarding the yes program in general, Yes। yeah, your stay there?
that you'd ठीक like है to debunk? Number 1. Number 2, जिन्होंने इस साल अब सितंबर में अप्लाई करने का जो सोच रहे हैं, what advice do you have for them? परफेक्ट। सबसे पहले मिथ्स की बात करते हैं। सबसे बड़ी मिथ ये थी कि इफ यू गो टू द यस प्रोग्राम की फुली फंडेड एक्सचेंज ये पे, आप फिर वापस अगले 2 इयर्स के लिए यूएस अप्लाई नहीं कर सकते अंडर ग्रेजुएट या उस लेवल के लिए। that's a myth. You cannot apply वापस आने के 2 इयर्स तक इमिग्रेशन के लिए, बट यू कैन अप्लाई फॉर अ स्टडी वीजा। जब मैं जा रही थी अपने एक्सचेंज प्रोग्राम पे, तो मेरे माँ बाप का सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि वी आर प्लानिंग टू सेंड अपनी बेटी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए, तो इन केस अगर हम इस प्रोग्राम पे भेज देंगे तो फिर नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए तो शी वोंट बी एबल टू गो, तो उसके मतलब वो 2 इयर्स जाया हो जाएंगे। बट दैट्स अ मिथ, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर स्टडी वीजा। जैसे मैं आई हूँ, आई केम बैक पाकिस्तान अपना सक्सेसफुल एक्सचेंज ईयर करने के बाद 2022 के जून में, एंड 2022 के अगस्त में आई केम बैक फॉर माय कॉलेज। Hmm. So it's a myth. You apply for a study visa and if it gets approved, you're good to go. But you do have to go back अपने exchange year की end date पे, वरना you'll stay there will be illegal because you have to apply for a different kind of visa there. So that was a myth about it. Also, I want to say एक बात कि आप इस चीज का ध्यान रखें. We didn't get a chance to talk about it earlier कि अगर आप यूएस के स्कूल में जाएंगे, you'll either get placed into 11th grade or 12th grade. So if मैं गई थी अपना O level करके, O3 के एग्जाम्स देके मैं गई थी. So I was enrolled in 12th grade there because मेरी education 11th grade तक पाकिस्तान में schooling हुई हुई थी. As you know, O level is 1 year ज़्यादा metric से. तो उन्होंने कहा कि as per high school schooling, she is 11th grade की standing पे, क्योंकि O level is 3 years metric में, आप 10th grade में जब होते हैं, हम 11th grade में होते हैं O3 में. So they were like, इसने 11th grade तो कर ली school की, so they enrolled me in 12th grade and I was lucky enough to get a high school diploma and graduate from there. But even if you get enrolled in 11th grade there, then you will not get a diploma or graduation from the US high school. You will have to come back to Pakistan and continue, do your A levels or do your FSC. So मतलब आपने वापस आके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है. It is not guaranteed that you will get graduation. Even if you get enrolled in 12th grade in the US, some schools don't offer graduation to Pakistani kids. I was lucky enough to be one of O levels British. They recognize the British system of education, and it was also like a small school. So they offered like graduation to me, but not many kids who enrolled there and get graduation. Many kids have to come back. The मेरे peers के साथ की, they have to continue their education back home in Pakistan. They have to. So आप इस बात का ख्याल रखें कि ये आपका साल वेस्ट तो नहीं कहूंगे, because there are like so many benefits of it. It's the Exactly. best. It's the best experience. It opens so many doors for you. Like अगर मैं इधर यूनिवर्सिटी में आज पढ़ रही हूँ, I give so much credit to my exchange experience that gave me so much exposure and that helped me to be the person I am today. So I would say कि please आप अपनी पूरी research करें कि आपके एजुकेशन पे कोई इम्पैक्ट पड़े, and know your priorities. अगर आपके लिए ओके है कि एक साल मैं वापस आके रिपीट कर लूँ and I want that exposure, go for it. But अगर आपकी प्रायोरिटी है कि नहीं, मेरी पढ़ाई मेरे लिए ऊपर है, I want to be on track, do as you Hmm. say, but I'm warning you कि do your research, be इस माइंड में बात रखें कि पक्की ग्रेजुएशन नहीं है कुछ. लाइक मैं गई थी तो मैं इस माइंडसेट के साथ गई थी कि मैंने वापस आके ए लेवल्स पूरा करना है, 2 इयर्स की पढ़ाई और करनी है. पर मैं गई तो मेरे स्कूल ने मुझे ग्रेजुएशन ऑफर की, और ग्रेजुएशन डिप्लोमा की बेसिस पे मैंने फिर कॉलेज के लिए अप्लाई किया. Hmm. लेकिन अगर मैं पाकिस्तान आती तो मेरे पास एक ऑप्शन ये थी कि अगर मैं रिपीट ना करना चाहूँ कि मैं सिर्फ अपने डिप्लोमे की इक्विवेलेंसी बनवा लूँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में एनरोल हो जाऊँ. So you have to see your options, research about it. And also another, the second question, a tip I want to give for the upcoming people, please apply, give it a shot, मेहनत करें, like be dedicated. Parents support करें बच्चों को and go for it. It's the best thing that'll ever happen to you. So thankful that I was able to avail this opportunity and my अच्छा, parents while we're supported me and talking about everything. the exposure वाली Yeah, चीज, as I'm growing yeah. up, obviously हमारा अपना अंडरग्रेड भी करीब आ रहा है. अब मुझे रियलाइज दिन ब दिन होता है कि एक्सपोजर किसी चीज का Exposure, ना रिप्लेसमेंट नहीं है. मतलब exposure is अगर everything. जैनब को वापस आके 2 साल वो ए लेवल्स करती तो हम सारे चले जाते, और जैनब ए हाँ, लेवल्स कर रही होती, लेकिन जो कर रही जैनब होती. ने I उस would say, एक साल में ले लिया ना, वो हम नहीं ले पाए थे. तो वी वुड हैव बीन Hmm. बिहाइंड हर it's इन a worth मोस्ट it experience. वेज ना. तो यू It's a मस्ट कंसिडर कि एक्सपोजर जो आपको जाकर मिलेगा, जिस तरह You जैनब ने must भी बात की. consider. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी opportunity. Please avail it, और especially the girls. Even if हमारे साथ तुर्बत से लड़कियां हैं, स्कर्दू से लड़कियां हैं, मतलब no matter where you're from, आपका जो भी बैकग्राउंड है,
please be motivated, especially women empowerment. We need Pakistani women 100%. going out 100%. We're like big ambassadors of women empowerment, all three of us, I सही know. बात. And please, लड़कियां especially apply करें. We want to see our girls representing Pakistan, making Pakistan proud here in different countries, revealing all these opportunities. And please, there's so many opportunities out there. U.S. Department of State, Fulbright, Yes program. There, just look for research about scholarship opportunity. अगर yes program नहीं तो कोई और program. Please give it a go. Don't be afraid to try कि मेरा तो नहीं होएगा. मैंने भी यही कहा था हाँ, मेरा नहीं ये होगा. तो कोई ये पता किसी ने नहीं कहा होता. है अल्लाह पर्सनली से दुआ उस करें. उससे Yes, मैं yes, आई विल डील विद yes. देम पर्सनली. ये कोई यस, ये कोई ये ना एक्सक्यूज नहीं है. करें भाई. मेहनत करेंगे तो कोई कुछ क्यों नहीं मिलेगा. मेहनत करेंगे कुछ भी मिलेगा. बस यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, you'll get it. तो मेरी एडवाइस है कि work hard and be hopeful. Or if you need anything, I'm here. You guys can contact me if you need any tips or anything. I'm on Instagram पे, Facebook पे, email पे, कहीं भी. हाँ, तो हम um, ना ज़ैनब तुम्हारा ईमेल नीचे डाल देंगे, तो इफ एनीबॉडी yes, वांट्स टू रीच आउट टू यू. मैं बोल भी अच्छा. देती हूँ. My email is zwaqas, zwaqas@umass.edu. If anybody wants to contact for tips or anything, they can send me an सही email हो or गया. परफेक्ट. अच्छा, perfect. ज़ैनब उसकी बात कर रहे थे ना 11th ग्रेड में एनरोलमेंट और 12th ग्रेड में. फर्स्ट करो आपने Yes, 10th तक ही आपके 10 yes, इयर्स ऑफ एजुकेशन हुए हैं. आप वहाँ जाके कहो कि अच्छा कैन आई अपीयर फॉर अ टेस्ट और समथिंग, जिससे मुझे yes. आप अगली क्लास में प्लेसमेंट It कर दें depends. मेरी. It depends upon school to school. Some schools जब बच्चा नहीं आता है, they'll take like a exam और उस basis पे वो देखते हैं कि बच्चे की proficiency level क्या है कि हम इसको 11th में डालेंगे 12th डालेंगे. तो it's all depends upon school to school. आप कुछ नहीं उनको मतलब उनके पे है, आप उनसे request कर सकते हैं. कुछ लोग खुद ही करते हैं. Like मेरे स्कूल ने कोई टेस्ट एग्जाम नहीं लिया. They said कि we have your transcripts and we will be placing you in 12th grade. बस it depends upon school. Schools पे डिपेंड करता है. कुछ छोटे स्कूल होते हैं, कुछ बड़े स्कूल होते हैं. तो it all depends upon school और उधर का जो भी system है. So the last question of the day and the most important one, what's the difference between high school curriculum and OA levels? Because we've heard that OA levels is quite depressing. So please agree with us on this. Yes, यस. I totally agree with you guys. High school US का काफी आसान है, काफी comparing to OA level, because OA level में आप 3 साल की for example पढ़ाई जो पढ़े हैं आपने, उस 3 साल के एंड पे वो बिल्कुल सारा जो पढ़ाई आपने सिलेबस कवर किया उसका एग्जाम देना है. हाई स्कूल में ऐसा नहीं है. हाई स्कूल में सेमेस्टर सिस्टम है. 6 मंथ्स की एक क्लास होती है. आपने 6 मंथ में जो पढ़ा आपने उसका एट द एंड एग्जाम दिया. और एग्जाम्स भी ज्यादातर इतने मुश्किल नहीं होते हैं. और दे विल टेक क्विजेस वीकली ताकि आपको आखिर में एक क्यूमुलेटिव एग्जाम ना देना पड़े. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्लास एंड द टीचर, बट इट्स nothing compared to A level and the difficulty. High school is supposed to be fun for you. आप sports खेलें, साथ साथ पढ़ाई भी देखें. But if you take AP classes, like I took AP physics, AP computer science and AP mathematics, I had 3 AP classes. उससे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. AP classes is like our O level classes. So, but it is still manageable. O level is very hard because I don't agree with it. आप कैसे 3 साल की पढ़ाई का एक पेपर में आप जज कर सकते हैं. हो सकता है किसी के घर में उस पेपर से एक दिन पहले कोई हालात खराब हो गए हो, ये कोई रैंट तो फैमिली हमारी कभी नहीं प्रॉब्लम हो खत्म होने जाए, वाली. फैमिली प्रॉब्लम हो जाए और अगले दिन उसकी तबीयत नहीं ठीक, वो मतलब 3 साल उसके मुक गए, फिर से रीअपेयर होना पड़ेगा जस्ट बिकॉज उसकी तैयारी थी, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी मे बी, या कोई घर में प्रॉब्लम हो गया. आई डोंट एग्री विद इट एट ऑल. एंड हाई यूएस हाई स्कूल में देयर इज लाइक नो बोर्ड सिस्टम. आपने जो एग्जाम देना है, जो आपके मार्क्स आने हैं वो स्कूल में आने हैं, वो टीचर पे डिपेंड करता है. तो काफी टीचर्स आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट भी ऑफर कर देंगे. अगर सेमेस्टर में आपका अच्छा ग्रेड नहीं है तो टीचर आपको, दे आर सो नाइस कि वो आपको कहेंगे बेटा आप ये 2-3 एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स कर लें, मैं आपका थोड़ा ग्रेड ऊपर, सो दैट यू कैन पास द क्लास, या आप अच्छी स्टैंडिंग में हो जाए. तो यूएस की टीचर्स आर सो हेल्प. सो द टीचर्स इन माय स्कूल वर नॉट वेरी सपोर्टिव. आई रिमेम्बर मेरी मामा आई थी स्कूल टू गेट माय ट्रांसक्रिप्ट्स अटेस्टेड. स्कूल वाले, another message, स्कूल वाले प्लीज सपोर्ट द किड्स हु आर अप्लाइंग, डोंट बी लाइक अ ब्रिक वॉल फॉर देम. स्कूल वाले, जब मैं गई थी अपने ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट कराने स्कूल से, उनने मुझे इतने चक्कर लगवाए कि नहीं हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, आप परसों आए, आप उस ऑफिस चले जाएं, आप वीपी के पास चले जाएं. भाई, आप बच्चा कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, सपोर्ट देम, बी हेल्पफुल टू देम. काउंसलर्स एंड स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बी हेल्पफुल टू द किड. अब स्कूल से काफी डॉक्यूमेंट साइन होने होते हैं. मेरी मामा जब गई थी ट्रांसक्रिप्ट साइन कराने, तो मेरी वन ऑफ द टीचर्स, आई वोंट टेक एनी नेम्स, यू गाइस नो इट प्रॉब्ली,
तो शी सेड मेरी मामा को कि आप अस्सलाम वालेकुम, व्हाई आर यू हियर। तो मेरी मामा ने बताया कि ज़ैनब वैसे अप्लाई करी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर हर, वी होप वो आगे स्टेजेस में क्लियर करे। और हमने वो स्कूल के ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह साइन करने थे, तो इसलिए मैंने कहा मैं खुद ही आ जाऊँ। मामा इसलिए आई थी क्योंकि मुझे तो मेरा काम ही नहीं कोई करके दे रहा था, तो मामा की थी मैं जाऊँ तो शायद कोई सीरियस ले ले, तो स्कूल में तो ख्वार कर रहे थे मुझे। तो मामा आई तो मेरी टीचर कहती है कि बिल्कुल भी ना भेजेगा, बिल्कुल नहीं, साल जाया हो जाएगा। शी वाज वेरी डिस्करेजिंग। उनने सीधे सीधे मामा को बोला है कि आप यू विल रिग्रेट इट, और कोई जरूरत नहीं है। मैं और उसके बाद मेरी मामा जो बहुत सपोर्टिव है, और मतलब शी वाज लाइक ओ माशाल्लाह गुड फॉर ज़ैनब। वैसे उनके माइंड में सेकंड थॉट्स आना शुरू हो गए कि ये टीचर एंड शी इज फ्रॉम द एकेडमिक्स वगैरह, लाइक शी नोज अबाउट पढ़ाई वगैरह, ओ लेवल ए लेवल, एंड शी इज सेइंग इट, तो मतलब इसकी क्या मतलब वजह है। So Mama was like a little shocked and a little doubtful as well after that. But after that, she was like, okay, like उनकी बात उन्होंने इतनी सर पे सवार नहीं की, शुक्र obviously, है because अल्लाह का। but she was shocked. She was like, why is she saying that? मतलब कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं पता या उन्हें पता है, या what is she trying to say? So please school वाले support kids. If you're a teacher, कोई recommendation के लिए बच्चा आपके लिए आता है, if they need it for the process or to get something signed, बी सपोर्टिव। और मतलब और इवन फैमिलीज, मेरे साथ क्या हुआ कि माय प्रोग्राम गॉट पोस्टपोन्ड बाय वन होल ईयर, जिसमें मैंने फिर वर्चुअल किया था। वर्चुअल प्रोग्राम कोविड की वजह से हुआ था, जिसमें वी यूज्ड टू हैव लाइक वीकली सेशंस विद द होस्ट फैमिली, और वो आपको अपने ट्रेडिशंस और लाइफ स्टाइल के बारे में बताते थे। तो मेरी वर्चुअल होस्ट फैमिली अलग थी और असली होस्ट फैमिली अलग थी। एंड व्हेन आई वेंट देयर, दे लिव लाइक minutes away from each other, so I still used to go visit my virtual host family and spend time with their kids, and तो लाइक मजे का सीन था। तो मेरा ये हुआ था कि व्हेन माय प्रोग्राम गॉट पोस्टपोन बाय होल ईयर, तो सब घर वाले, इट गॉट पोस्टपोन बाय 3 मंथ्स के कोविड ठीक हो जाएगा, फिर गॉट पोस्टपोन बाय अनदर 6 मंथ्स, फिर अनदर 3 मंथ्स। तो कुछ दूर के रिश्तेदारों को होता था ये जा ही नहीं रही, कब जाना है तुमने, मतलब पीपल यूज्ड टू मेक टॉन्ट्स एट मी कि तुमने तो जाना नहीं था, क्या हुआ, तुमने तो जाना नहीं था। मतलब मुझे अंदर से इतनी मतलब इतनी मैं डिप्रेस टाइप हो गई थी कि यार ये पता नहीं होगा भी क्यों नहीं होगा। एक मोमेंट पे तो फुल कैंसिल हो गया था, दे सेड कि वी आर सॉरी, नहीं होगा। और फिर अल्लाह की ऐसी करनी हुई कि लाइक 2 weeks आफ्टर दैट दे कॉल्ड अगेन सेइंग कि वी मेड लाइक एन अमेंडमेंट इन आवर पॉलिसी, तो वी स्टिल सेंडिंग सम किड्स। तो आई वाज लाइक ओह दैट इज व्हाट, लाइक पूरी होप खत्म हो गई थी मेरी। लाइक पहले उन्होंने वर्चुअल प्रोग्राम पे मुझे शिफ्ट किया, मैंने 3 महीने का वर्चुअल प्रोग्राम किया, उसने उनके बाद उन्होंने कहा 6 मंथ्स और हम इसको पोस्टपोन करें। 6 मंथ, मैंने कहा चलो ठीक है। लाइक अगस्त में जाना था, पर उन्होंने कहा हम जनवरी में जा रहे हैं। जनवरी में जाना था, उन्होंने कहा अप्रैल में जाएंगे। अप्रैल जब पहुंच गए ना, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, जा ही नहीं रहा। फिर उसके बाद 2 हफ्ते बाद उन्होंने कहा नहीं, हम अगस्त में जा रहे हैं। तो मेरी जो दूर के रिश्तेदार थे, मेरे माम बाबा ने बातें सुनी, मैंने बातें सुनी कि अच्छा जा ही नहीं रही, आप में बड़ा शौक था बाहर भेजने का, क्या हुआ, मतलब ये सारा कुछ ऐसे ही होता है, कोई नहीं ऐसे। तो सही बता रहा हूँ legit। तो क्लोज फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव, बट दूर के रिश्तेदार जो थे, वो दूर की फुप्पी चाची गाँव से लोग, वो सारे ये, मतलब ये बातें आपको सुननी पड़ेंगी। आप इनको बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, कोई जरूरत नहीं सुनने की, आप कोई ध्यान ही ना दें, आप बस बी फोकस्ड, आपका क्या गोल है, व्हाट डू यू वांट टू डू एंड एवरीथिंग। सो फैमिलीज, टीचर्स, प्लीज बी सपोर्टिव ऑफ द किड्स, लाइक सही हो गया। Okay, so I think that's about it. That's all the questions we wanted to ask. If you guys have any questions from Zainab or any of us, you can mention in the comments down below, or you can DM us. We'll forward the messages to Zainab. And yeah, thanks. Thank you everyone for watching. Take care. Allah thank you हाँ so and thank you much, Zainab Allah for joining Hafiz। us. Of course, thank you for having me here, Allah Hafiz।